Good morning, all. Myself, Dr. Navneet Singh. I am heading the Department of Physiotherapy in Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center, New Delhi. So, first of all, I would really want to thank Dr. R.K. Mudgil and organizing team of HCAP to organize such a big international webinar for physiotherapy fraternity, and thanks for inviting me for speak on cancer rehabilitation topic. So today I am going to cover rehabilitation aspects in cancer care and physiotherapy management of trismus. So as we all know, cancer refers to large number of diseases characterized by development of abnormal cells that divide uncontrollably and have the ability to infiltrate and destroy normal body tissue. So I am just taking you to the presentation. So this is what is cancer. So as we have discussed in the first part, you can see the normal cells. In the second diagram, you can see the abnormal cells starts proliferating, and in the I hope I am audible now. So in the first diagram, you can see the normal cells. In the second diagram, you can see the abnormal cells. They are starts proliferating. So in the third diagram, you can easily see the cells starts dividing, and it is there in the towards the basement membrane only. So these are called abnormal cells. They are multiplying, but they are cancer cells. They are not proliferating through the basement membrane. So these cancers are in situ only. So in metastasis or malignancy, you can see the cells starts proliferating, and they can invade the other body tissues, and they can proliferate to the other body parts. So there are 4 stages of cancer. Stage 0 is there is no cancer, only abnormal cells, and the cancer is in situ only. So in stage 1 means cancer is small and spot only in one area and has not spread to any lymph nodes or other body areas. तो इसको हम कहते हैं अर्ली स्टेज कैंसर. स्टेज 2 और 3 की बात करें अगर हम, तो इसमें दे हैव द एबिलिटी टू प्रोलिफरेट टू द नियर बाय टिश्यूज एंड लिम्फ नोड्स. और अगर हम स्टेज 4 की बात करें, द बिकम्स एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर और मेटास्टैटिक कैंसर. सो लेट्स टॉक अबाउट कैंसर स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया. So one woman dies of cervical cancer every 8 minutes in India. For every 2 women newly diagnosed with breast cancer, 1 woman dies of it in India only. Mortality due to tobacco use also is estimated at 3,500 persons every day. And tobacco use accounted for around more than 3 lakhs deaths in men and women in 2018. तो हम ग्लोबोकॉन डाटा की बात करते हैं. ग्लोबोकॉन डाटा 2018 is suggested that the people living with the disease in India with the cancer is 2.25 million. Every year new patients registered, it's more than 11 lakhs. अगर हम 2018 की बात करें तो more than 11 lakh cases were registered, and the deaths in 2018 it's around 7 lakhs. In men it is more than 4 lakh. In women it is around 3 lakh. So why are we talking about statistics? Because you can see the number of cases are such a large, so there will be a need of healthcare facility also. There will be a need of onco rehabilitation for these patients as the growing advances in the medical field are occurring. So by the side, physiotherapy also needs to be accounted for these patients to manage their physical disabilities and overall quality of life. So these are the epidemiology in India, and you can easily see the occurrence in metropolitan cities is higher than rural areas. The reason behind this can be because there is less awareness and less screening procedures in the rural areas. But in the metropolitan cities, the causes of cancer, the occurrence of cancers are more because the reporting cases are more. So these are cancer treatment. Whenever we need to go for cancer rehabilitation, we should know what kind of cancer treatment patients are going through. So first हम डिस्कस करते हैं हार्मोन थेरेपी की. हार्मोन थेरेपी इज अ सिस्टमिक थेरेपी. हार्मोन थेरेपी इज अ सिस्टमिक थेरेपी, दैट मीन्स हम ड्रग्स एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट्स के अंदर.
So that works to act, block or remove hormones from the body to slow or stop the growth of cancer cells. बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करें, बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर दैट इन्फ्यूज हेल्दी blood forming stem cells into the patient body to replace damaged or diseased bone marrow. So these are mainly bone marrow transplantation occurs for diseases, blood regarding cancer diseases. Chemotherapy is normally uses one or more anti-cancer drugs, but it has a problem because it damages healthy cells also. Surgery is a surgical removal of the cancer part. And the next is targeted therapy. Targeted therapy का मतलब होता है it works by targeting the cancer's specific genes or proteins or tissue environment that contributes to cancer growth. अगर हम रेडिएशन की बात करें, it uses beam of intense energy to kill cancer cells. Immunotherapy, it helps immune system to fight cancer. So rehabilitation in cancer patient. So let's start with cancer rehabilitation program. So I have divided the cancer rehabilitation into the post-operative rehabilitation first, orthopedic oncology rehabilitation, rehabilitation in gynae and uro-oncology, breast cancer rehabilitation, head and neck cancer rehabilitation, neuro-onco rehabilitation, rehabilitation during or after chemotherapy or radiation, and other causes can be there. So let's start with the basic terminologies of cancer. Like जो हम day to day बेसिस पे पेशेंट्स में देखते हैं कि व्हाट ऑल द नॉर्मली नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम द पेशेंट आर गोइंग विद. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग कैंसर रिलेटेड फटीग. सो कैंसर रिलेटेड फटीग क्या होता है? कैंसर रिलेटेड फटीग डिस्क्राइब इट्स अ नॉर्मल कैंसर फटीग. इट डिस्क्राइब्ड एज पैरालाइजिंग. Usually it comes suddenly, does not relieve by rest, and even it does not aggravate by any activity or exertion. Fatigue means the patient is undergoing cancer treatment and fatigue is there. Patient is feeling that he is very lethargic, he is very tired, he gets tired very easily. So the main physiotherapy management for cancer related fatigue is proper posture should be maintained. You need to give proper posture training to the patient. Teach safe ways of handling and lifting the heavy objects in the like gardening during household activities. Energy conservation techniques should be followed for these patients. It has to be on the when patient is undergoing chemotherapy, you should teach the patient when early symptoms from cancer related fatigue are starting, so you need to go for energy conservation technique. One is Jacobson relaxation technique. I myself I'm just evaluating the effect of Jacobson relaxation technique in managing, just wait a minute, in managing cancer related fatigue. So gentle exercises should be followed, gentle stretching exercises. प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो कैंसर रिलेटेड फटीग में जो आपको एक्सरसाइजेस करानी है, इट शुड बी वेरी जेंटल. उस एक्सरसाइजेस की वजह से उसका फटीग बढ़ना नहीं चाहिए. सो फॉर दिस एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, एवरी मोडालिटी इज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड. सो अकॉर्डिंगली प्लान योर ट्रीटमेंट. अगर हम नेक्स्ट की बात करें, एक हमने कैंसर रिलेटेड फटीग की बात की, तो नेक्स्ट है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी. कैंसर रिलेटेड फटीग को हम CRF भी कहते हैं. कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी को हम कहते हैं कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी. CIPN इज कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी. सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एज वी ऑल नो, इज डिफाइंड एज द कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम डैमेज टू द पेरिफेरल नर्व्स. सो व्हाट कैन वी डू बेस्ट फॉर दीज पेशेंट्स? वी कैन डू nerve mobilization, we can do stretching exercises for nerves, we can do stretching of musculatures involved. Like if it is involved in upper limb, you need to go through stretching of upper musculatures, and if it is in lower limb, you need to go through proper stretching of hamstring muscles, larger muscles, and as well as small muscles. Postural stabilization exercises strictly to be followed for these patients, as there are tendency of fall in these patients. So balance exercises and postural stabilization exercises is to be incorporated into your treatment regime for CIPN. CIPN is chemotherapy induced peripheral neuropathy. So next is cancer related cognitive impairment.
कैंसर रिलेटेड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट को कहते हैं CRCI, कैंसर रिलेटेड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट. सो इट डिस्क्राइब एज इम्पेयरमेंट्स इन मेमोरी, verbal fluency, thought processes and attention span. And it has been seen that in 70% of patients who are receiving cancer treatment in their lifetime, they experience either CIPN, they either experience CRCI, or they either experience CRF, or combination of any of these. तो CRCI में द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पुट्स लाइक इंक्रीज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिव एक्सरसाइजेस, टेक द पार्टिसिपेशन ऑफ द पेशेंट बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम कोग्निटिव इम्पेयरमेंट ऑल्सो. सो टीचिंग बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज फॉर दिस पेशेंट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इट इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर दिस पेशेंट्स. एंगेजिंग पेशेंट्स प्रोस्पेक्टिव इन एक्सरसाइजेस लाइक वट patient wants to do. So accordingly plan your treatment from the sideways. If like patient is having is having a hobby of playing outside, like he has a hobby of going outside the home, so always incorporate such exercises which he is familiar with, which he is doing from his day-to-day activities, either yoga, either gentle exercises. So CRCI में it has to be active participation of the patient should be there. So next हम बात करते हैं आर्थ्रैल्जिया की. आर्थ्रैल्जिया इज आर्थ्रैल्जिया हमें सबको पता है कि जॉइंट पेन है. सो वाई आर्थ्रैल्जिया इन कैंसर? आर्थ्रैल्जिया इट हैज़ बीन सीन दैन जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स एरोमेटाज इनिबिटर लेते हैं ड्यूरिंग देयर कैंसर ट्रीटमेंट, it has been seen that they suffer from arthralgia, and because of arthralgia only उनका कैंसर ट्रीटमेंट रोकना पड़ता है. So you can tell the doctors or clinicians that physiotherapy have an active role in preventing these symptoms, arthralgia, and patient can go back to the cancer treatment again from the physiotherapy point of view. So next is cardiotoxicity. अब कार्डियोटॉक्सिसिटी इट्स अ नॉर्मल टर्म एज वी ऑल नो, बट हम यहाँ कैंसर स्पेसिफिक हम कार्डियोटॉक्सिसिटी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कार्डियोटॉक्सिसिटी इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट ऑन हार्ट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर लीडिंग टू एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, और जिसमें ऑलरेडी CVD के सिम्टम्स हैं, जो ऑलरेडी हार्ट डिजीज से कॉम्युनिटीज़ हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं, तो उसमें ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो जहाँ हम कार्डियक रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, सो पुट दैट कार्डियक रिहेबिलिटेशन इन ओंको रिहेबिलिटेशन एंड ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंगली. बट यू शुड नो लाइक वट पेशेंट आर टेकिंग मेडिसिन, वट पेशेंट आर टेकिंग ड्रग्स, वट काइंड ऑफ थेरेपी और ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन. So next is behavioral and psychological changes. So overall, if you are doing all these exercises, so put some behavioral and psychological therapy also in that part. And next is quality of life. So overall, these exercises and all these therapy, it automatically increases the quality of life of these patients. So हम बात करते हैं पेन की. So cancer pain is a broad term. It's a broad term and it has a different mechanism, different pain mechanism is there. I'm not going in detail into that. So cancer related pain को हम 3 categories में divide करते हैं. The first is tumor related pain. First is tumor related pain. Second is treatment related pain. And third is debility or pain related to cancer. So अब हम pain में क्या दे सकते हैं in cancer patients? So TENS is a safe modality. Is a safe modality to start in cancer pain. It's a highly recommended safe modality in any metastasis in anything. So TENS में आप क्या देंगे? TENS में आप देंगे कन्वेंशनल TENS और गो विथ लो फ्रीक्वेंसी TENS. अगर आपको मसल स्टिमुलेशन भी देना है तो ऑलवेज चेक विद द पेट स्कैन ऑफ द पेशेंट. अगर पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है, पेशेंट की कीमोथेरेपी हो चुकी है, सो ऑलवेज सजेस्ट कि पेशेंट शुड कम बैक विद द पेट स्कैन. अगर पेट स्कैन में मेटास्टासिस नहीं है, सो यू कैन स्टार्ट एनी फिजियोथेरेपी मोडालिटीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन. बट अगर मेटास्टासिस इट इज देयर, सो अवॉइड डीप हीटिंग मोडालिटीज. आई एम अगेन सेइंग अवॉइड डीप हीटिंग मोडालिटीज. ओनली सुपरफिशियल हीट and it should be lukewarm heat. It should be lukewarm heat. It should not be deep heat. So superficial heat packs can be given, cold packs can be given,
टेंथ मोडालिटी इज द सेफेस्ट मोडालिटी। कुछ स्टडीज़ कहती है कि माइक्रोवेव भी हम दे सकते हैं, एंड कुछ स्टडीज़ बट शॉर्ट वेव डायथर्मी इट्स हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दिस पेशेंट्स। इवन अगर malignancy is there, if there is a chance of malignancy, avoid giving any other modality. Always see PET scan report. PET scan always give you the idea that cancer कहाँ का spread हुआ है and what all other body parts are suffering from metastasis, or there is a growth or there is a no growth. So always go with this. So I'm just showing you, I'm just taking you towards the presentation. So these are the evidences. So as you can easily see, the evidences are there for role of physical exercises in CIPN. This is the evidence कि chemotherapy induced peripheral neuropathy में physiotherapy has a major role, and in arthralgia also they are supporting role of physical exercises, supporting role of physical exercises in behavioral, CRF, cardiotoxicity. You can easily see supporting role of physical exercises in CRCI, cognitive impairment, and you can see evidences supporting role of physical exercises in CRF and quality of life, and in secondary lymphedema also. I will come back to lymphedema also. So again I am coming back to these different categories of like post-operative rehabilitation, orthopedic oncology rehabilitation, rehabilitation in gynae and uro-oncology, breast cancer rehabilitation, head and neck cancer rehabilitation, neuro-onco rehabilitation, rehabilitation during or after chemotherapy or radiation therapy or others. So I will discuss each one of them one by one, and after that I will come back to your questions. So I am not interrupting in between. So first is post-operative rehabilitation. Post-operative rehabilitation की, as we all know, we as a physiotherapist we definitely know what kind of ICU care is needed in post-surgical patients. अगर हम post-surgical patients की बात करें तो chest physiotherapy is there, postal drainage can be there, limb physiotherapy, ambulation. Early ambulation is very much needed in these cancer surgical patients. And what kind of patient requiring intensive chest physiotherapy? I must say thoracic and abdominal surgeries. Ab now we should know as a physiotherapist, like if there is a case of coming of a Whipple procedure. Whipple procedure होता है जिसमें there is a carcinoma in the pancreas. Whipple procedure patients में intensive chest physiotherapy की requirement होती है. बकल म्यूकोसा के पेशेंट्स में इंटेंसिव चेस्ट थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आफ्टर हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी पेशेंट्स. ईसोफेजेक्टमी में, बिकॉज इट इज़ वेरी मच नियर टू द लंग्स, intensive chest therapy is required, and in any patients who are undergoing lobectomy or any lung surgeries. So these patients require intensive chest physiotherapy in post-operative period. So I am again taking you towards to the slide. So orthopedic oncology rehabilitation. Orthopedic oncology rehabilitation को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. लाइक फर्स्ट इज पोस्ट सर्जरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम. जिस जोन से सर्जरी हुई है अकॉर्डिंगली वी नीड टू मैनेज ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन. अब लिम्ब सैल्वेज सर्जरीज की बात करते हैं. लिम्ब सैल्वेज सर्जरीज क्या है? दिस इज अ सर्जरी टू रिमूव अ ट्यूमर इन अ लिम्ब. आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज अ सर्जरी टू रिमूव अ ट्यूमर इन अ लिम्ब विदाउट रिमूविंग द होल लिम्ब. दैट मीन्स लिम्ब सेविंग सर्जरी. The bone and tissue around the tumor may also be removed. So that means a metal implant or bone graft can be put in that tumor. उसको हम कहते हैं limb salvage surgery. So there is no set protocol for this patient. No set protocol. Do not go according to your protocols. Every patient is different. Always discuss with the surgeons the approach they are taking, the muscles they are cutting, the bone graft they are putting. So that type of surgery you should know in limb salvage surgery. Accordingly plan your treatment. So अगर amputation हुआ है, that amputation will follow a normal amputation guidelines only. जो आपका protocol amputation का है, you can go through that. But limb salvage surgeries has to be taken very cautiously, because there can be a reason that the bone graft can be misplaced also with the improper handling of the जॉइंट और बोन इन दैट एरिया. सो मैं एक सर्जरी के बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पर, रोटेशन प्लास्टी के बारे में. रोटेशन प्लास्टी को क्या कहते हैं हम? इट्स अ रिजेक्शन ऑफ अ मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर अराउंड नी जॉइंट.
rotation plasty is a resection of a malignant bone tumor around a knee joint. So I'm just taking you to the video. So as you can easily see, so surgical procedure used to resect a bone tumor around the knee joint in children. So what happens when there is a bone tumor around the knee joint? So the bottom of the femur, the knee joint, the upper tibia are surgically removed. So in this, nerves and arteries remains intact. The lower leg is then rotated, as you can easily see, to 180 degree, and the lower leg is then rotated and then attached to femur. Now what you can see in this, yes, so the plantar flexion of ankle during rehabilitation, these kind of patient, the plantar flexion of ankle becomes knee extension and dorsiflexion of ankle becomes knee flexion. I'm just again, you can see. So this kind of surgery is called as rotation plasty. So in rotation plasty, the role of physiotherapy in early stage is very minimal, only gentle active movements, but in stage 2 and stage 3, it is highly impact. Only physiotherapist can make the patient mobile again with the use of processes. So these patients really need to take consideration. So now I am taking to yes, so rehabilitation in gynae and uro-oncology. So gynae and uro-oncology patients में हमेशा जो भी gynae and uro-oncology post surgical cases होते हैं, always go for lower limb rehabilitation also in the post operative period only. Lower limb rehabilitation is very much necessary. Lymphedema can be occur in these patients also, because there is the removal of inguinal lymph nodes or popliteal lymph nodes also. So always take consideration of lymphedema management, perineal exercises and management of incontinence should be incorporated in these patients. So breast cancer rehabilitation की बात करते हैं. Breast cancer rehabilitation में the most common occurring cancer in women is breast cancer. The most common occurring cancer in women is breast cancer. So the main problems occurring in women with breast cancer is axillary web syndrome, lymphedema, post-op shoulder pain and brachial plexopathy. So I'm again saying axillary web syndrome. What is axillary web syndrome? एक्सिलरी वेब सिंड्रोम को हम कोडिंग भी कहते हैं और लिम्फेटिक कोडिंग भी कहते हैं. सो इट्स अ रोप और कोड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप अंडर द आर्म एंड इट कैन ट्रेवल टिल द एल्बो एरिया ऑल्सो. सो वट यू नीड टू डू फॉर दिस पेशेंट. एक्सिलरी वेब सिंड्रोम में हम क्या करेंगे? सो इन एक्सिलरी वेब सिंड्रोम में गो फॉर टिश्यू मोबिलाइजेशन एंड इट हैज टू बी वेरी हार्ड. पेन विल बी देयर. ड्यूरिंग पेन you can apply TENS therapy for these patients. Tissue mobilization should be incorporated. Myofascial release should be there. Always mark the points. It will run like this. The structures are run like this. The exact cause of axillary web syndrome, it is nowhere. Some say it is because of the lymphatic disruption here. It has been seen that lymphedema also occur in axillary lymph node dissection. So some says that axillary lymph node dissection precipitate the cause of axillary web syndrome. So what you need to do? Tissue mobilization. First is tissue mobilization. Second is myofascial release. Third is nerve gliding. That means vascular structures and nerve structures should be mobilized. Tissue release and break that taut bands. Break that taut cords and restore movement and increase the range of motion of the shoulder joint also. If you are not increase the range of motion of shoulder joint, that ultimately lead to reoccurrence of axillary web. So we have read axillary web. Now next we will read brachial plexopathy. So brachial plexopathy is a late side effect of radiation. It is a significant cause of morbidity in breast cancer patients who are receiving radiotherapy also. So for brachial plexopathy, go with electrical stimulation.
and go with therapeutic exercises and emphasis on active biceps movement. It's like a brachial plexopathy में क्या होता है, the whole it's like a peripheral neuropathy जो हमने CIPN पढ़ा था, it's like that only, but there will be a loss of the upper limb movement. So you really need to cope up with those activities. You need to give the brace to the patient, you need to give electrical stimulation also, and you need to do therapeutic exercises also, and tell the patient to actively participate in the exercises, to actively do the active biceps function exercises. So I am again taking you towards the presentation. So this is the axillary web syndrome we have read. लिम्फेडिमा प्रिवेंशन, लिम्फेडिमा मैनेजमेंट. अगर हम लिम्फेडिमा की बात करें ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में, जिन पेशेंट्स में एक्सिलरी जिसमें सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी की जाती है, जिसमें सेंटिनल लिम्फ नोड डायसेक्शन किया जाता है, उसमें चांसेस कम होते हैं लिम्फेडिमा के, और जिस पेशेंट्स में एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन होता है उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं लिम्फेडिमा के. सो वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द बेसिक सर्जरीज. अगर लंपेक्टमी हुई है, देयर इज अ लोकलाइज्ड रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, देन देयर विल बी नो लिम्फेडिमा. देयर आर lesser chances of getting lymphedema, very less chances of getting lymphedema. It's 1% in all. But if there is an axillary lymph node dissection, that definitely will lead to 70% of those patients will lead to lymphedema. So always I believe in prevention strategies. So this is the lymphedema management. CDT is a complex decongestive therapy, जिसमें हमारा आता है MLD, manual lymphatic drainage, compression therapy आता है, physical exercises आता है, precautions. So precautions is very much necessary. I will speak later on also for precautions. So this is the pneumatic compression which we used to do in our hospital in every day-to-day practices also with the MLD also. So pneumatic compression के there are indication and contraindications also. अगर हम indications की बात करें, lymphedema is an indication, but always go for contraindications. Always go for contraindications also. If patient is receiving blood thinners or there is any thrombus in the upper limb, do not give pneumatic compression. That is a life-threatening problem. So do not give pneumatic compression in these patients. If patient is having any pacemaker also, do not give pneumatic compression. So always evaluate your patient. It is very much necessary. In every patient, the cause of lymphedema is not breast cancer only. There can be a swelling, local swelling because of DVT also. So always go with the proper evaluation, proper testing of these patients. So I personally believe is prevention is better than cure in lymphedema. So always go with prevention strategies. Prevention strategies should be incorporated in the post-operative period only. Patient की surgery होती है, in the next day only, first day only, go with the prevention strategies. Tell the patient what they need to do, what they don't need to do. हम कहते हैं कि आप ब्लड प्रेशर रीडिंग्स नहीं ले सकते, बट स्टडी सेज ब्लड प्रेशर रीडिंग्स कैन बी टेकन विद इन द लिम्फेडिमा पार्ट ऑल्सो. इफ लिम्फेडिमा इज देयर, ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल to your precaution strategies. Do not give fixed precaution strategies. Always go with the surgeries also, like what kind of surgeries patient undergoing. So prevention strategies are very important. Now न्यूरो-onco rehabilitation. न्यूरो-onco rehabilitation की बात करें तो spine rehabilitation program, post paralysis rehabilitation, vestibular rehabilitation. So neuro rehabilitation is almost in the same way. Like if the tumor in the cerebellum part, the balance exercises you need to do the same, like only that the way you are dealing with neuro rehabilitation only. Head and neck cancer rehabilitation. So this is different. I am discussing some different methodologies, the different terminologies or nomenclature which we are coming into day-to-day activities. So these are post-operative care should be followed for head and neck cancer patients. Trispan's and dysphagia management, facial palsy management, mostly common in parotid gland tumor. Facial palsy is most common in parotid gland tumor, and neck and shoulder exercises should be incorporated. So now I am just coming back. Yes. So head and neck cancer की बात करें तो head and neck cancer में हम क्या सोचते हैं? The cancer of the cancer can be in the parotid gland, cancer can be in the thymus part, cancer can be in the mandibular part,
in the oropharyngeal structures, in the neck structures. So accordingly plan your treatment. Post operative care we know, chest physiotherapy हमने दे दी. What are the complications patient will face during their lifetime? So एक हम definition कहते हैं trismus. So I am coming to my second topic, physiotherapeutic management of trismus. Trismus क्या होता है? Trismus is a difficulty in opening log jaw, difficulty in opening the jaw movement. So trismus is most prevalent in head and neck cancer patients. Trismus की बात करें, if trismus is there, patient will have difficulty in opening of the mouth. If difficulty in opening of the mouth will be there, patient will have a difficulty in chewing. If chewing is difficult, the patient will have a difficulty in swallowing also. That ultimately leads to malnutrition. And it's a life-threatening. So trismus is a life-threatening condition. We really need to manage trismus in the early stage only. If surgery is done in the oropharyngeal cancer for head and neck cancer patient, if there is any difficulty in mouth opening, always go to manage trismus in the early stage. अगर पेशेंट सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी कराने जाता है ट्रिस्मस के लिए, तो रेडिएशन दी जाती है इन द नेक एरिया. सो इट विल अगेन बिकम फाइब्रोज द नेक टिश्यूज, और अगर नेक टिश्यूज फाइब्रोज हो गए, दैट विल लीड टू फाइब्रोसिस एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू मोर सिवियर फॉर्म ऑफ ट्रिस्मस एंड इट इज इरिवर्सिबल. सो अगर फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो गया है, ट्रिस्मस कैन बिकम इरिवर्सिबल, एंड इफ यू आर डूइंग maximal stretching, that will break the skin. So trismus management it should be incorporated in the early phase also. तो मैं कैंसर रिहेबिलिटेशन में एक बात यहाँ पर मुझे याद आई है, मैं बोलना चाहूँगा. कैंसर रिहेबिलिटेशन में हम इंडिकेशंस को नहीं देखते, हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को. द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आर लाइक दिस in cancer rehabilitation and indications like this. So firstly, make the list of contraindications, just remove that contraindications, that you cannot give these strategies, you cannot give these therapeutic protocols. Always go which is more indicated in cancer patients. So now I will discuss regarding the trismus. So the temporal mandibular joint dysfunction includes fibrosis due to radiotherapy, scarring, weakness and atrophy of the muscles producing the movements after surgery, and intra-articular damage due to radiotherapy and surgery. So जिसमें भी limited mouth opening होती है less than 3 fingers, तो you can easily say that trismus is there. Okay, so manage that trismus. So there are many modalities for the trismus. The rehabilitation for preventing reduced mouth opening mainly concentrates on programs using different jaw stretchers. So अगर हम devices की बात करें, there is TheraBite, there is OraBite, wooden spatula, all can help with trismus. Physical therapy can help relax the muscles, increase joint flexibility and other oromotor exercises. So what I used to prescribe to my patients. So I used to prescribe OraBite to the patients. TheraBite international standards follow करता है. TheraBite की cost होती है around 40,000. So we need to think on the patient perspective also. When you are in cancer rehabilitation setup, when patient comes to you for rehabilitation, आपको पता लगेगा कि पेशेंट का जितना भी फाइनेंशियल स्टेटस है वो एकदम डाउन चला गया है बिकॉज ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट. अगर हम उसको 40,000 का थेराबाइट प्रिस्क्राइब कर देंगे, पेशेंट विल नॉट टेक दैट थेराबाइट. सो देयर इज अ लोकल एक ओराबाइट आता है, इट ऑल्सो वर्क्स द सेम वे एज थेराबाइट. सो उसमें हम क्या कर सकते हैं ओराबाइट में, द ओराबाइट इज लाइक दिस, यू नीड टू पुट इन अ माउथ, उसको आप पीछे से हैंडल कर सकते हो. तो नाउ व्हाट यू कैन डू, you can go for hold relax techniques with that OraBite to manage trismus. So what you need to do, you need to stretch and tell the patient to contract. The patient will contract like this, contract, then relax and give the stretch. So accordingly you can see a good result in trismus management within 5 or 7 sittings if you are giving any jaw mobilizer, and if you are giving hold relax techniques or contract relax techniques also. Anything can work in these patients. And sideways, go for tongue mobilization, go for jaw mobilization. So jaw retraction exercises, protrusion, retractions, lateral movements, tongue range of motion exercises, tongue isometric exercises.
टंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में क्या करते हैं, जैसे हमारा अपर पैलेट है, सो दिस इज द टंग मूवमेंट, सो यू नीड टू कॉन्ट्रैक्ट द टंग, होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड्स देन रिलैक्स, होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड देन रिलैक्स, 10 काउंट होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। हम अपने पे करके देखेंगे, टंग मूवमेंट्स में हम 10 सेकेंड तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग में 5 रिपीटिशंस विद 5 काउंट होल्ड भी कहते हैं पेशेंट्स को विद द हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स, सो दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज द टंग रेंज, टंग स्ट्रेंथ। सो टंग रेंज ऑफ मोशन, टंग स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज, जॉ मोबिलाइजेशन, जॉ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, टंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज एंड देन ओरा बाइट। ओरा बाइट अगर आप देते हैं पेशेंट्स को तो उसके साथ एक सॉफ्ट गोनोमीटर टाइप मिलता है, जिसको हम एक स्केल कहते हैं। उस स्केल से दे कैन मेजर द ओपनिंग ऑफ द माउथ और यू कैन इजिली मेजर थ्रू दिस ऑल्सो। सो व्हेन ट्रिस्मस कैन बी डिफाइंड व्हेन देयर इज अ, जो हमारा जो रेंज है इट इज लेस देन 35 mm, सो हम उसको ट्रिस्मस कहते हैं। सो अकॉर्डिंगली प्लान योर ट्रीटमेंट। सो आई एम जस्ट टेकिंग यू अगेन टू द प्रेजेंटेशन। So now you can easily see this is aura bite. So ये white color का है, it is not visible. So when you press this button, this will open. So when you press this button, this will open like this. So you just need to put it in mouth, press this button, it will open it. So accordingly you can tell them to do exercises. So in additional, always go with neck mobility exercises, prevention of neck muscle contractures on the side of surgeries, always prevent neck muscle contractures. During radiotherapy, physiotherapy needs to continue. Active exercises should be done in available range. It has to be done by the patient. So many devices available in the market, dynamic mite opener, threaded tapered screw, tongue blades, Therabite, Orabite, but personally I will recommend Orabite और वुडन स्पैचुलास। वुडन स्पैचुला इज वेरी चीप, इट इज इजिली अवेलेबल इन द। सो वुडन स्पैचुलास में क्या होता है, लाइक आपने आइसक्रीम स्टिक्स जैसे आपने देखी होंगी, उसमें आपको माउथ में रखना है, तो यू कैन इजिली इवेल्युएट, लाइक अगर 5 स्टिक्स जा रही है तो नेक्स्ट डे कितनी जा रही है, 6 स्टिक्स जा रही है, नेक्स्ट डे 7 स्टिक्स जा रही है, तो पेशेंट कैन इजिली इवेल्युएट देयर रिकवरी। सो अल्टीमेटली दे विल पार्टिसिपेट इन द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। सो अगर जहाँ ट्रिस्मस होता है तो वहाँ डिस्फेजिया भी होता है। डिस्फेजिया इज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग due to the trauma to the upper aerodigestive tract during treatment of head and neck cancer is associated with aspiration with an increased risk of pneumonia and a reduced quality of life. So the main reasons for swelling problem in head and neck cancer patient after radiotherapy are because of the reduced tongue strength, reduced laryngeal elevation, reduced tongue base retraction during swallowing. So now here I really need to dysphagia. What kind of dysphagia occurs in head and neck cancer patients? These dysphagia are called structural dysphasias. These are not physiological dysphagia. Physiological dysphagia occurs in stroke. Structural dysphagia occurs when there is the removal of the structure. It is very difficult, and sideways it is very important also to rehabilitate these kind of patient to help them with the dysphagia, because there is the removal of the oromotor structures. Some ways there will be the removal of the tongue, some ways there will be the removal of the mandible, some ways there will be removal of the lower lip. So for these patients there is the structural dysphagia occurs in these patients. So you really need to evaluate dysphagia also with trismus. Always evaluate dysphagia and trismus together for these patients, because you need to prevent malnutrition. So always discuss with the doctor if the patient is on Ryle's tube or Foley's tube or with the PEG tube. तो अगर PEG tube पे भी है, Foley's tube पे भी है, Ryle's tube पे भी है, तो patient is taking nutrition. Sideways start giving some semi-solid items to these patients. So dysphagia, always give exercises, oral hygiene, dietary modification. You can also provide VitaStim therapy or different maneuvers to manage this. So thank you so much. I hope this session is informative to all of you. So now I will answer the questions.
So first question is, at which stage of cancer we can start physiotherapy? So you can start any stage of cancer. In any stage of cancer you can start physiotherapy. Always go like what kind of treatment is patient is taking, what kind of physical disabilities patient is feeling, what kind of pain, what kind of any movement restriction. Always go with in any stage. Can physiotherapy done before the cancer treatment started? I don't know where questions are going. Yeah, speech therapy. जो मुझे questions दिख रहे हैं, I'm just answering. Is speech therapy is also helpful with oromotor physiotherapy? Yeah, speech therapy is very much important. So I'm personally writing some pages on speech therapy and swallowing therapy in head and neck cancer patients. It is under process. So speech therapy can be really help in these patients. Actually speech में क्या होता है, तो there will be a different vowel sounds you need to produce for these patients. So for that always take the help of speech therapist. Always put oromotor exercise. Speech therapist also put oromotor exercises also to rehabilitate these patients. So for speech therapy and swallowing therapy, oromotor exercise is very much necessary. Second question is, onco play major role physiotherapy part? Yeah, physiotherapy part is very much important. How to use wooden spatula? Wooden spatula you can use like this, in this way you can put in the mouth. अब आप इसमें आपको एक डिफिकल्टी भी आएगी. समवेयर आफ्टर हेड एंड नेक कैंसर ट्रीटमेंट देयर विल बी द रिमूवल ऑफ द होल टूथ स्ट्रक्चर. तो ऑलवेज टेल द पेशेंट टू कॉन्टैक्ट डेंटिस्ट एंड सो दैट दे हैव अ ओरोमोटर tooth structure should be there, so that you can easily apply that wooden spatula. Nice presentation. Can trismus be permanent or if not? Yeah, trismus can be permanent and it can be easily relieved also. So it depends on the stage of trismus and how much it take for healing. Trismus, I am talking about the trismus cause because of the head and neck cancer. अगर हम हेड एंड नेक कैंसर की बात करें, जब पेशेंट डायग्नोसिस लेके आता है ना कि उसको मुश्किल है, अगर पेशेंट टोबैको च्यू कर रहा है या कोई भी रिस्क फैक्टर्स है उसके, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, अगर बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है, अगर पेशेंट इज कमिंग टू द सर्जन कि आई एम फीलिंग समथिंग इन माय माउथ, और तो ट्रिसमस तब से ही होता है. प्री ऑपरेटिवली ट्रिसमस विल बी देयर. पेशेंट विल कट द ट्यूमर पार्ट. पोस्ट ऑपरेटिवली प्लीज ट्राई टू मैनेज दैट ट्रिसमस. इट इज क्वाइट मैनेजेबल. But when radiotherapy completes, it is not manageable in the full range. It is not manageable. So when muscle fibrosis occurs, it is irreversible. I have shared Orabite picture. Can manual therapy be given in case of trismus patient? Yeah, you can provide manual therapy. हम जो joint mobilization की बात करते हैं, joint retraction की बात करते हैं, I really need to put manual therapy. So it all covers under manual therapy only. You can really give manual therapy for these patients. Is cranial irradiation cause neuro-oncogenic cancer? It can be a risk factor, but there are no proper cases. Some studies say, some studies denies it. No. Physiotherapy slows or stops the malignant cell proliferation? No. कुछ स्टडीज कहती है कि अगर यू आर डूइंग एक्सरसाइजेज, इफ यू आर डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइजेज, यू आर फिजिकली एक्टिव, दैट कैन डिक्रीज द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ कैंसर. बट इफ कैंसर अकर्स, फिजियोथेरेपी कैन नॉट डिक्रीज मैलिग्नेंट सेल प्रोलिफरेशन. प्री ऑपरेटिव पीरियड में या प्री हैबिलिटेशन इज वेरी मच नेसेसरी इन कैंसर पेशेंट. अगर हम प्री हैबिलिटेशन में ही पेशेंट को इवेल्युएट कर ले, स्टार्टिंग में ही हम उसको बता दें कि हम आपको बाद में क्या क्या एक्सरसाइजेस कराने वाले हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो आई थिंक अंजलि गुप्ता ने ये क्वेश्चन रखा है. इट इज़ वेरी मच, आई एम इन फेवर ऑफ रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन प्री ऑपरेटिव पीरियड. इफ योर डॉक्टर कैन गिव यू प्री ऑपरेटिव रेफरल, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड आई थिंक इट कैन रियली हेल्प फॉर दीज पेशेंट्स. No, there will be no TENS is the safest modality. There will no contraindication of TENS in these patients, but always go with low frequency TENS only or conventional TENS.
is massage is contraindicated in DVT? Yeah, massage is contraindicated in DVT because it has been seen that only with passive range of motion exercises the emboli, the thrombus of DVT can dislodge and it can become pulmonary emboli. Ultimately patient can have a cardiac arrest also. Compression therapy is very helpful for this patient, but compression therapy alone cannot help. Compression therapy एक passive substitute होता है. You really need to go for CTT also. High DPP, what is high DPP? I don't know. Diastolic blood pressure. If it is high diastolic blood pressure, then contraindication is there. Yeah. सो एंकल की बात करें तो एंकल को हमने रोटेट कर दिया 180 डिग्री तक. तो जब एंकल को रोटेशन प्लास्टी में 180 डिग्री तक रोटेट कर दिया तो उसी में दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जो एंकल का प्लांटर फ्लेक्शन था वो बन गया नी एक्सटेंशन. तो यू रियली नीड टू वर्क ऑन एंकल मसल्स ऑन रोटेशन प्लास्टी पेशेंट्स. सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन एंकल मसल्स. आप सोचिए जिसको नी फ्लेक्शन करना है विद दैट प्रोस्थेसिस ऑल्सो जो उसको लगने वाला है आगे, तो जो मसल स्ट्रेंथ होती है डोर्सिफ्लेक्सस की, प्लांटर फ्लेक्सस की. सो फिजियोथेरेपी रियली नीड टू वर्क ऑन दैट एक्सपेक्ट. या इन ब्रेकियोप्लेक्सोपैथी इज चेस्ट फिजियो इंडिकेटेड? या इट कैन इजिली इंडिकेटेड. No cancer patient need physical therapy to cancer. Yeah, every cancer patient I think need physical therapy, but always go with the treatment they are undertaking. If they are feeling any physical problem or any problem related to physiotherapy is needed in these patients. That's why I'm telling you knee is only removed. अगर knee को remove कर दिया तो ankle becomes knee joint. The ankle itself becomes knee joint. इन रोटेशन प्लास्टी अगर हम प्रॉपर आफ्टर फिटिंग ऑफ प्रोस्थेसिस, आई हैव पर्सनली सीन 3 to 4 पेशेंट्स ऑफ रोटेशन प्लास्टी टिल नाउ. सो इट कैन रियली हेल्प विद दिस पेशेंट विदाउट प्रोसेसिस पेशेंट कैन इवन स्विम. तो पेशेंट कैन डू एक्टिविटीज लाइक अगर हम हाफ नीलिंग में करेंगे तो पेशेंट कैन इन हाफ नीलिंग पेशेंट कैन गो इन द स्विमिंग पूल एंड पेशेंट कैन इजिली स्विम ऑल्सो विद रोटेशन प्लास्टी. Patient can walk also with rotation plasty with the half kneeling of other leg and the ankle of the affected limb. Mode and intensity of TENS, it should be a low frequency TENS. Intensity is not contraindicated when the movement of the joint is initiated in patient in post-operative phase. Because movement of the suture tissue. Yeah, that's why I told you to always discuss with the surgeon, because it depends on surgery to surgery. There is no set protocol, there is no set timing like when you can start the physiotherapy part. Can we use reducing lymphedema? If study says you can definitely use, but always take care. क्योंकि काइनेसियोलॉजिक टेपिंग की बात करें अगर हम हमेशा कंप्रेशन अगर देते हैं लिम्फेडिमा पेशेंट में, इट हैज़ टू बी प्रोग्रेसिव एंड इट हैज़ टू बी सिमिल्टेनियस ऑल्सो थ्रू आउट द अपर लिम्ब. अगर हम अपर लिम्ब की बात करें तो ये पूरे लिम्ब में सिमिल्टेनियस कंप्रेशन होना चाहिए टुवर्ड्स द अपर लिम्ब सो दैट दे कैन ड्रेन द फ्लूइड टुवर्ड्स द सेंट्रल चैनल्स. ऑलवेज जब भी हम सीडीटी की भी बात करते हैं तो हमेशा सेंट्रल चैनल्स को पहले ओपन करना पड़ता है. आफ्टर दैट ओनली मैनेज द अपर लिम्ब लिम्फेडिमा. In rotation plasty patients, how do you go about the rehab? Rotation plasty में जब in the post operative phase patient has to be immobilized. अगर patient को बेड पे भी टर्न लेना है ना तो वो no nursing staff or no healthcare staff will provide. Only physiotherapist can make the patient turn or doctor himself can make the patient turn, because that time the sutures will be there. So after 2 or 3 months after discussion with the orthopedic surgeon only start the physiotherapy program. But in rotation plasty physiotherapy has to be done very cautiously.
in rotation plasty, it has to be started later on and it has to be very aggressive, very aggressive. 10 की duration you can set. There are no contraindications. You can set by yourself. Dietary changes. What dietary changes are required during treatment? I think ये dysphagia treatment के लिए होगा dietary changes का. तो dietary changes हमेशा पेशेंट को dysphagia के टाइम पे मुश्किल होती है लिक्विड लेने में. हम हमेशा प्रिस्क्राइब कर देते हैं टेक वाटर 6. ऑलवेज स्टार्ट विथ सेमी सॉलिड्स. ऑलवेज स्टार्ट विथ सेमी सॉलिड्स लाइक कस्टर्ड हो गया, दही हो गया, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट विद एंड इन बिटवीन ऑलवेज टेस्ट द इसके बीच में हम वीडियो फ्लोरोस्कोपी भी कर सकते हैं डिफरेंट मैनेज करने के लिए और इवन टेस्टिंग करने के लिए कि डिस्फेजिया की कंडीशन क्या है. बट सेमी सॉलिड कैन बी स्टार्ट इजली. अगर पेशेंट को कफ आता है सेमी सॉलिड के साथ भी तो हमेशा यहाँ पर एज वी ऑल नो कि यहाँ पर दो पाइप्स होती है, एक फूड पाइप है और एक एयर पाइप है. अगर फूड इज टचिंग एयर पाइप द कफ विल बी देयर. कफ तो होता ही है, साथ में देयर विल बी अ साइलेंट एक्सपिरेशन. सो ऑलवेज अवॉइड इन दैट पेशेंट्स इफ कफ इज देयर while having semi-solid. फिजियोथेरेपी रिहैब फॉर ब्लड कैंसर पेशेंट. ब्लड कैंसर पेशेंट के लिए फिजियोथेरेपी रिहैब इज नॉट देयर, बट ब्लड कैंसर पेशेंट अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, लाइक इफ पेशेंट इज अंडरगोइंग कीमोथेरेपी, इफ पेशेंट इज हैविंग bone marrow transplantation, after that physiotherapy recommends. After that, as per the need of the patient, you can start physiotherapy. TMJ joint dysfunction is trismus only, as we have discussed. Yeah, I will just show you Orabite picture once again. How can we treat preoperative trismus? Yeah, we can treat preoperative trismus also, but जब हम प्री ऑपरेटिव ट्रिस्मस हमारे पास आता है तो पेशेंट उस स्टेज तक कैंसर की पहुंच चुका होता है कि सर्जरी इज वेरी मच रिकमेंडेड. वी हार्डली हैव 3 or 4 days. वी कैन मैनेज स्टिल एट दैट लेवल, वी कैन मैनेज ट्रिस्मस, बट उस समय पेशेंट का जो एक साइकोलॉजिकल स्टेटस होता है, पेशेंट रियली वांट्स टू गो अंडरगो सर्जरी सो दैट जो उसका लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है वो मैनेज हो जाए. तो इसलिए उस समय वो ट्रिस्मस मैनेज करने का नहीं सोचता. और जब भी हमारे पास भी पेशेंट आता है तो दे अल्टीमेटली गो फॉर द सर्जरी आफ्टर 2 or 3 days. हार्डली कोई पेशेंट 5-7 days तक रुकता है जिसको हम प्री ऑपरेटिव ट्रिस्मस ट्रेनिंग दे पाए. आई विल कम विद TMJ मोबिलाइजेशन. When we should initiate movement after surgery, and if earlier, what about the hindering of healing tissue? We can start in limb salvage surgery. We can start in the first POP only, post-operative day POD. We can start the physiotherapy protocol, but always start with isometric exercises only. After that, start doing mobilization as per the discussion with the doctor also, and after seeing the case. Limb salvage surgeries कहाँ पर हुई है और किस बॉडी पार्ट में हुई है और कौन से मस्कुलेचर्स इन्वॉल्व किए गए हैं, कहाँ का ग्राफ्ट लिया गया है, वेदर इट इज मेटल इम्प्लांट, वेदर इट इज अ बोन ग्राफ्ट. ऑलवेज टेक कंसिडरेशन ऑफ दैट. एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड इन हेड एंड नेक कैंसर. या यू कैन यूज टेंस therapy in head and neck cancer patient. If it is not malignant, you can use electrical stimulation also, but always see the level of malignancy. द लिम्ब साल्वेज सर्जरीज के सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो आती है जॉइंट रेंज ऑफ मोशन. इन दीज पेशेंट्स यू कैन अप्लाई CPM ऑल्सो लेटर ऑन, बट CPM भी हम किस लेवल पे, आफ्टर सीइंग द लेवल ऑफ हीलिंग यू कैन अप्लाई CPM ऑल्सो. वी नीड टू इंक्रीज द रेंज आफ्टर द sutures आर हील्ड, आफ्टर द होल टिश्यू, होल मसल मस्कुलेचर आर ऑल्सो हील्ड. स्टमक ऑपरेशन में you only need to do post-operative chest physiotherapy, and after that early mobilization and lower limb exercises also, because it decreases the strength of lower limb musculature. Yeah, electrical stimulation is very much helpful to strengthen face muscles. Yeah, it will affect breathing pattern. That's why we need to work on breathing pattern only. Pre-op management of cancer. Physiotherapy pre-op management of cancer. We cannot manage cancer. We cannot deal with cancer directly. We can only deal with the physiotherapeutic problems, with the physical problems with the patient is facing, either pre-operatively or post-operatively also, or with any other treatment also.
What are the contraindications for head and neck cancer patients? I am not getting it. What are the contraindications for head and neck? For every cancer patient, always see the malignancy level. If malignancy is not there, you can apply any machine, but do not apply on the tumor part. Do not apply on the affected part. You can use conventional. I think I have answered these questions. How can we prevent dysphagia effectively? We can dysphagia can prevented in head and neck cancer patient if early swelling exercises can be incorporated in the post-operative regime in the ICU only, or in the when patient is shifted to ward. For dysphagia, we need to give pharyngeal exercises. We need to give different maneuvers to facilitate the swallowing function. Always see the level of pharyngeal exercises, because you can apply neck, you can give neck isometric exercises also for this patient to manage dysphagia. Actually every patient is also different. There are set protocol for dysphagia exercises which you can use in some kind of patient, in set protocol in different patients also. But for oromotor patients, you really need to go for oromotor exercises. If the oropharyngeal cancer is there, you need to go for pharyngeal exercises, and swelling should be started in the post-operative regime. Yeah, you can use med techniques for trismus. There is no contraindications. अब जो क्वेश्चंस रह गए, आई एम जस्ट आंसरिंग दैट क्वेश्चंस. स्ट्रैटेजीज फॉर ओरोमोटर ट्रेनिंग और स्ट्रक्चरल डिस्फेजिया. स्ट्रैटेजीज फॉर ओरोमोटर ट्रेनिंग और स्ट्रक्चरल डिस्फेजिया. स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस. जब स्ट्रक्चरल डिस्फेजिया की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रक्चरल डिस्फेजिया की हम तभी बात करते हैं व्हेन देयर इज अ स्ट्रक्चरल्स रिमूव. सो ऑलवेज गो, अगर टंग रिमूव हुआ है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि कुछ सर्जरीज ऐसी है जिसमें डिस्फेजिया कैन नॉट बी प्रिवेंटेड ऑल्सो. अगर डिस्फेजिया है तो होगा ही होगा. तो वो जैसे हमारा अगर हम बोले कि बेस ऑफ द टंग, अगर बेस ऑफ द टंग इज रिमूव्ड, इफ द कैंसर इज देयर इन बेस ऑफ द टंग, तो इट्स dysphagia rehabilitation is very difficult in these patients. So you can start the therapy. We are also giving oromotor exercises, but patient is having difficulty swallowing during their radiotherapy sessions also, and even after radiotherapy sessions, patient having dysphagia problem for around 2 to 3 months. So when the whole musculature gets healed, after that you need to give, you can start giving vital stim also for these patients at this level, so that you can increase the strength of the musculature of this. Vital stim is the vital stim therapy. It is highly effective in treating dysphagia. What techniques of physiotherapy are contraindicated? What techniques of physiotherapy? No technique is contraindicated in chemotherapy and radiation therapy. No technique. You can give any during chemotherapy and radiation therapy. All cancer related like techniques are not contraindicated. Only electrical modalities can be contraindicated. जैसे अगर हम बात करें मल्टीपल माइलोमा की, जैसे आपका एक क्वेश्चन आया पोस्ट कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी. अब कुछ पेशेंट आते हैं आपके पास की कीमोथेरेपी हुई है, बट ऑलवेज सी अगर उनका मल्टीपल माइलोमा की कीमोथेरेपी हुई है, डू नॉट गिव स्पाइनल एक्सरसाइजेस. ऑलवेज गो फॉर लॉग रोलिंग, और जैसे हम स्पाइन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, ऑलवेज गो विद दैट प्रोटोकॉल ओनली. इफ द स्पीच इज इफेक्टिव इन पेशेंट विद हेड एंड नेक कैंसर, आई हैव डिस्कस्ड. व्हाट टाइप ऑफ टेंस? Incentive spirometer is indicated for every cancer patient except head and neck cancer patient. Head and neck cancer patients में spirometry is not indicated unless until अगर कोई पुराना पेशेंट है हेड एंड नेक कैंसर का, उसको आप दे सकते हो. अगर पोस्ट सर्जिकल इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, यू शुड नॉट गिव स्पायरोमेट्री टू दिस पेशेंट. पोस्ट ऑपरेटिव, आई एम टेलिंग यू अगेन, पोस्ट ऑपरेटिव इज द ऑल्टर केस ऑफ सर्जिकल पेशेंट, देन यू कैन गिव. I will demonstrate TMJ mobilization. TMJ mostly. So now I'm stopping in between. Thank you so much. One TMJ demonstration is left. I will put video of TMJ demonstration
in the HCAP page, so you can easily see TMJ mobilization. Thank you so much, and thank you so much, Dr. Mudgil. I think he is calling me.